This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये विशेष प्रयोजन आपके समक्ष हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम लेकर उपस्थित होते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को, हमारी थाती को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का ये जो उपक्रम है, ये जो ज्ञान सत्र है, इसमें इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वेदांत के गढ़ ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, जो कि स्वयं गीता उपनिषद की निष्णात अध्येता हैं, अध्यापिका हैं और भारत में वो संभवतः पहली महिला टीचर हैं जो जापानीज स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद का अध्ययन कराती हैं, अध्यापन कराती हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए देश के ख्यात नाम कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, भारतीय मूल के इन दिनों अमेरिका रहने वाले मशहूर वैज्ञानिक एमिरेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के वेदव्यास सेंटर फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल जी, यूएसए से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, और हमारे साथ हैं बेंगलुरु से प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, एस्टीम्ड गेस्ट को हम वेलकम कहें। इससे पहले आज के जो एपिसोड की भावभूमि है, आज के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, उसकी संक्षिप्त एक जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज एपिसोड। गीता उपनिषद का अध्याय 7वां चल रहा है, चैप्टर 7, और आज जो विवेचित होने वाले श्लोक हैं उन श्लोकों की संख्या है 14 से 17, 14 to 17 वी आर टेकिंग अप इन दिस एपिसोड। और आपको पिछले जो एपिसोड्स हम चलते आ रहे हैं उनमें जो ये जो खास सीरीज है, इस वक्त जो स्पेशल सीरीज है, जो विशेष क्रम है, जिसे हम कह सकते हैं कि पहले पेड़ पौधे आए या कि बीज, या पहले अंडा आया कि मुर्गी, इस विशेष सीरीज में आज हम बहुत ही विलक्षण एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक भगवान अपना परिचय और अपनी स्थिति के बारे में हमें बताते आ रहे हैं। आज भगवान अपनी दुर्दम्य शक्ति, क्लासिक एनर्जी की जो उनकी पावर है, माया, उसके बारे में समझा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि यह किस तरह से दुस्तर है और इसके प्रभाव में किस तरह से हम आ जाते हैं, इससे बचने के क्या उपाय और भक्ति किस तरह की है, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये आज भगवान हमें बता रहे हैं। और खास तौर पर यह भी बताएंगे आज कि इन भक्तों में भी किन गुणों वाला भक्त श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। और नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल जी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं चैप्टर 7 के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 14 से 17, श्लोकास 14 to 17, पहले उनका रिसाइटल होगा और फिर प्रोग्राम की शुरुआत होगी। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्री
श्रीभगवानुवाच पुण्यो गन्धः पृथिव्याम् च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम् तरन्ति ते न माम् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरम् भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम् ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम् स च मम प्रियः। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आचार्य राधा जी से प्रोग्राम की शुरुआत करवा रहे हैं। राधा जी, स्वागत है। हरिओम। स्पीक लिटिल बिट लाउडर। Okay. Am I audible? Yeah, now you are absolutely. I apologize first for not being able to come last week because of my ENT problem. So I'll try to talk as much today. Thank you for missing me. Okay, so I'm going to start with the 14th verse where we're having the words Turatyaya Maya. This Maya Devi with the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, is very difficult to cross over. People who are accumulating things and people of samsara cannot get a detachment from her. Due to this attachment with her, people are happy, sad, and gain raga and dvesha. Difficult to cross over when we see her different from Ishvara. But when we see her as Ishvara's qualities, then she is very easy to gain detachment with. Mameva ye prapadyante. A human being should surrender to me and not consider him to be the owner of the objects and people that exist because of my Maya. One has a right to use the object of the samsara but not to own them, which actually exists because of my Maya. Bhagwan's Maya is like a magician's secret. When you become a magician's disciple, then he cannot fool you anymore, and in fact, he reveals all his secrets unto you. Similarly, when we surrender unto Bhagwan, then we can see his Maya. When a human being uses whatever he calls his mind towards Ishvara, then he crosses over Ishvara's Maya very easily. The 15th verse uses the word Dushkriti. This is for people who have an attachment with the destructive samsara and have desires towards them, and when their desires do not get fulfilled, then they get angry. And when their desires get fulfilled, then they have greed. Therefore, Dushkriti are the ones who become selfish and start doing karmas which are forbidden in the scriptures because of their desires of samsara. They speak lies, fool others, and become corrupt and dishonest due to their greed. They get dvesha and enmity and hurting violent acts due to their anger. Such people gain high ego and consider them to be superior than others. They only think of samsara to be real. Naradhamaha. Such deluded people are worse than animals because animals are moving according to their instinct. But humans are doing such karmas and moving in different hells and in different animal bodies. Mayaya aprita janaha. People who have got lost in the discriminative knowledge due to Maya. They are totally engaged in acquiring things and pleasure seeking of samsara. They are busy adorning their bodies, on homes, discovering new things, luxuries and comforts. They cannot even think of Ishvara. Now, here once we talked about Dushkriti in the 15th verse,
Now Bhagavan talks about Sukritin Naha in the 6th verse. These are the virtuous and pious people who have done a lot of punya, connect with Ishvara and follow the scriptures. There are 4 types. Now here, first of all, I would like to tell my viewers that we are going to use 4 words here which are different from 4 bhaktas. So there is a lot of confusion among people when we talk about Artharthi, Arthi, Jignasu and Jnani bhaktas. Now when we talk about these 4 words as Artharthi, Arthi, Jignasu and Jnani, different from what we are talking about here in this verse as Artharthi bhaktas, Arthi bhaktas, Jigyaktas and Jnani bhaktas. So bhaktas ke liye we are talking about here in this verse, not as Artharthi alone. So first I'm going to talk about the Artharthi bhaktas. The ones who want wealth, comforts, name and fame, etc. and seek Ishvara's grace for them are called Artharthi bhaktas. They only have faith in Ishvara, their desires. Since Artharthi bhaktas keep asking Ishvara for materialistic things, their desires go away and slowly they gain oneness with Ishvara in no time. The best example here that I would like to give is of Dhruva. We all know the story when Narad Muni approached Dhruva when he was, asked to leave his the father's lap, and he wanted to sit there, and then he seeked Lord's grace. Narad Muni came and helped him, and he started seeking Lord's things. Slowly he got everything. He got the kingdom, and he also gained faith in Ishvara. He gained oneness with Ishvara in no time. The second type of bhaktas are the Artha bhaktas. Artha bhaktas are the ones who seek Bhagwan's name during adversities, sore pain. They have a total belief in Ishvara for their cure and don't seek anyone's help except Ishvara. We saw a lot of example of Artha bhaktas during the time of Corona. When there was Corona crisis, we had all kinds of people as Artha bhaktas who said that we're not going to do anything and Bhagwan is going to take care of us. But the best example here I would like to give is of Uttara. There are also examples where Draupadi and Gajendra are mentioned, but as per me, I think Uttara is the best example because Draupadi and Gajendra seeked help from others first and then seeked Ishvara's help. But Uttara was the one who immediately asked for Bhagwan's help the moment the arrow stuck in her womb. So I think the best example would be of Uttara. Right. Then the third type of bhaktas, I can just complete Sharmaji. 2 more bhaktas are left. Yeah. Okay. So Jigyasu bhaktas are the ones who do not seek help from others like gurus, scriptures, mananam, nidinam, etc. But they look at Ishvara for gaining self-knowledge. And the best example that here comes into my mind is that of Uddhava. Uddhava sought Ishvara's blessings and directly approached him to gain self-knowledge, and that is how we got the Uddhava Gita. The last bhaktas are the Jnani bhaktas. These are the bhaktas who are totally engrossed in Bhagwan, in favorable, unfavorable situations, circumstances, incidents. And the best example that comes in my mind for a Jnani Bhakta is that of the gopis. When we look at the gopis, they are the ones I would like to call as the Jnani Bhaktas. Day in and out, any good situation, favorable, unfavorable, raining, not raining, whatever situation is, they're totally engrossed into Bhagwan. And they know Bhagwan. They can see Bhagwan in all the situations and they can feel Bhagwan around them, in them, over them, under them, everywhere. And I think that is the best example of a Jnani Bhakta, where the Bhakta engrossed into Bhagwan like those gopis, the
owning themselves and dancing around, taking Bhagwan's name in and out day. There I would like to end, Sharmaji, Right. and take the next verse, next session. Yeah, please. तो नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं. स्वागत है आपका. नमस्कार. Namaskar, namaskar. Welcome back, Acharya ji again. Thank you for that wonderful exposition. As you have explained, in the literal sense, the verse 14 can be read as with a metaphor. Delusion is a big river. That being so, O Dhananjaya, how can you hope to cross it over and become me? Now, in our own Maharashtrian tradition, we have the Bhavartha Deepika of Sri Jnanadev, who also evokes a very striking metaphor of a great river to convey the meaning of this verse. Ata Mahanadi hi Maya, Utroniya Dhananjaya, Mi hoije he aja, kai seniye. How will you become me, crossing this Mahanadi called Maya? But like the verse afterwards tells you, this river with all the three qualities is also coming from the Lord. So this delusional river is mountain born from Brahman itself, Jiye Brahmachala Aghada, and filled with the waters of wishes, Sankalpa Jala Cheya Ubhada. So how do you make way out of this? If the pravrittis are also from the Lord, the Maya is from also the Lord, and the liberation is also from the Lord. Now, this again depends on the type of the devotee or the bhakta or the seeker. And as we have seen, 4 of these categories have been mentioned. Now, as for remembering the Lord only when our need arises, that would be the common sort of garden variety of seeker. Dukhame sumirana sab kare. But then there is a higher seeker who remembers to thank the Lord because everything flows from him. So, sukh mein kare na koi jo hai, jo sukh mein sumiran kare to dukh kaye ho. Because it is not really sumiran alone that gives you this sense of liberation, but true knowledge that comes to you. The knowledge of the bandhas and the way to get out of them. It is therefore the most favored of the bhaktas or the seekers is the one with knowledge in the verses that we are considering. I would also like to remind our listeners of this beautiful Vairagya Shataka verse from Bhartrahari's, compositions. Asha Nama Nadi Manoratha Jala Trushna Taranga Kula Raga Grahavati Vitarga Vihaga Dhairat Dhrumadvansini Moha Varta Sudistara Gamana Protyunga Chinta Tati. Now this is the topic sentence. Yasya Paragata Vishuddha Manasa Nandanti Yogeshwara. So if you want to cross this river, this Mahanadi, you have to have a Vishuddha Mana and you should have discrimination. This is what has been spelt out in verse 15 and 16 by the Lord himself. 4 kinds of people who do not surrender are those who are ignorant of knowledge, those who lazily follow their lower natures, though being capable of knowing me, and those with deluded intellect. And of course, not to forget those with demoniac nature. These are the kinds of people involved as they are in too many goals and objects, and as Jnaneshwar Mauli says, get possessed by the demon of egotism and tend to forget their own essential inner nature, which is nothing but the Lord himself, Je bahuta eka avantaru ahankaryacha bhuta sancharu. So this bhuta sanchar has to be exorcised, as it were,
with this Jnana Moolam. And if once you get that, you realize there is no real difference between the gunas. And then perhaps, as I said, perhaps is a very dangerous word. Last time we had a wonderful discussion on this, and you find this kind of doubting, I won't say doubting, but open-ended quest in all of our traditions, and especially in verses like the Nasadiya Sukta, where the rishis are bold enough to wonder, is there an answer or not? Now, fortunately for us, in this beautiful Bhagavad Gita Upanishad, we have been told of the 4 kinds of righteous people who engage in the Lord's devotion. Those, as Acharya ji mentioned so well, who are distressed, those who seek knowledge, as well as those who seek wealth and worldly success as well. And finally, there are those who are established in knowledge. I shall halt my vivachan here and await my turn in the second. Thank you. राइट तो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास चलते हैं जी। स्वागत है। नमस्कार। Namaskar. I have a little different take on this, in line with what I have said in the past. I do not directly go to Bhagwan, although I understand why people have to think that everything is Bhagwan is saying for himself. I understand that. I understand the way that if you, because it's Bhagavan Krishna who is the Guru, who is the one who is showing everybody, he is perfect one. So he wants you to resonate with him. And I understand Radha ji's and others' idea that it is Bhagavan that we need to have the bhakti. And without bhakti, we will not resonate. So you have to have that Shraddha. But it is really all being said to ourselves. It's teaching being done so that I am the one who is going to reach that level. So in that sense, then the Gurumai, Mam Maya, Duratyaya, it's really all for me, but because for Bhagavan Krishna, nothing is really difficult. He can get anywhere. But he's talking about all this thing that you can go across the Maya. Maya is the one which has created us. So we are connected. We are not, in Indian concept, Hindu concept, we are not created actually. We are manifested. We are manifestation of the Supreme. So that means my hand is manifestation of Balram Singh. So my hand is Balram Singh also. It has to listen to me and understand what my mind is saying. So I like to posit that at least at some level, at least from my perspective, that we need to think that it is me who is being addressed here. The only reason is we are using Krishna is because Krishna is the perfect example for us to resonate with, and that can take in our own lives, for our own circumstances. So that's one. That's what my comment about the 14th sloka is. And then the 15th and 16th, I look at differently again. I do not necessarily look at Naradhama as less than any. Naradhama means Adham. That means we don't know our own dharma, basically. We do not know what a dharma human being is. We are Naradham. So it's very important. I want this 15 and 16. Here they are talking about 4 types of who do get to Bhagavan, the state of that being. And those are Duskrit, Mood, which means ignorant people, and Naradham and Asuram, and the Asur type of people, and which I think very beautifully has been explained by Radha ji and Nadkarni ji. But what I want to do is that the next sloka just says, Chaturvidha bhajante mam jana sukritino arjuna arto jigyasur artharthi jnani. I am connecting them to the 4 on the one door. The one who have duskrit, those who are evildoers, they are the one who are distressed. Artho means, they are in trouble. They are distressed. And so that's so obvious. The same thing will be the one who are mudha, ignorant, or the one ignorant means they should be the jigyasu.
one. They should be, because they don't know anything. So they are supposed to be looking for something. Then when they're looking for something, they can get to the Chaturvidha type people. And Artharthi I look at very differently. So there's just two words in here, Arth and Arthi. मतलब अर्थ समझने वाला. अर्थ का मतलब लोग यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड मानते हैं, मुझे अर्थ का मतलब अर्थ होता है, सीधी हिंदी है, बहुत सिंपल सी. अर्थ का मतलब अर्थ होता है. अर्थ का मतलब मनी नहीं, इट मीन्स मीनिंग. अर्थ मीन्स मीनिंग, नॉट मनी. सो अर्थार्थी कौन होगा? जो अर्थार्थी वो होगा जिसको नराधम है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसको अर्थ समझना है, जो जीवन में कर रहा है. करते ये सारे लोग एक्टिव लोग हैं. दुष्कृत करने वाले मूढ़ लोग और नराधम और असुर. असुर सबसे ज्यादा क्योंकि उनके अंदर शक्ति होती है. असुर और सुर में सिर्फ आ का फर्क है. लोग कहते हैं असुर और सुर दोनों ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं. तो उनके असुर का जो भाव है उसके अंदर ज्ञान, उसको ज्ञान चाहिए, लेकिन उसको कर्म करता रहता है, हरदम गलत काम करता है. लेकिन गलत काम करने, हमारे साइंस में गलत एक्सपेरिमेंट कुछ होता ही नहीं, क्योंकि we fail then we succeed, because we know that this is not true, and then what is left is what is really true. तो असुर का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे ऐसा लगता है. तो ये चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत. ये चारों का मतलब वहां ऊपर वाले जो चार लोग नहीं पा सकते हैं, वो अगर चार लोग इस भाव में आते हैं तो उनको बड़े आराम से मिल जाता है, उनका कहने का मतलब है. अब चूंकि एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चूंकि यहाँ पे आज प्रोफेसर झा नहीं है और वो हमारी उनकी एक बात चल रही है, विद्या और विधा मतलब जिस तरह से करते, विद्या का मतलब ज्ञानी. जो ज्ञानी नहीं होगा उसको तरीका कैसे मालूम होगा, और जिसको तरीका नहीं मालूम होगा ज्ञानी कैसे होगा. अब आज वो झा जी है नहीं है, तो फिर उन बाद में सुनते रहेंगे. मैंने उनको बोला कि विद्या और विधा दोनों एक ही से मिलते जुलते शब्द हैं. मैं केमिस्ट्री का व्यक्ति हूं. केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन का मतलब हम लोग समझते हैं अलग अलग निकाल के. तो इसलिए ये चतुर्विधा जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. चतुर्विधा भजन्ते माम, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि ये विधा इनकी किसकी है. इन्होंने यहाँ पे लोगों को जोड़ा है. चतुर्विधा का मतलब वैसे तो तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान से जोड़ा है कि जो लोग कौन लोग हैं. ज्ञान, या तो ये ज्ञान है उनके पास या ज्ञान चाहिए उनको. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ज्ञान चाहिए. डिस्ट्रेस्ड लोगों की अपनी विधा होती है. डिस्ट्रेस्ड लोग आर देयर काइंड ऑफ पीपल हु हैव they are people, they know not, or they know very different, like they are distressed. सेम वे जिज्ञासु जो होता है, उसको ये नहीं कि उसको जो ज्ञान है, बल्कि वो जो ज्ञान नहीं है उसके पीछे भागता है. उसी तरह से अर्थार्थी का जो मैंने कहा, अर्थार्थी का मतलब मटेरियल एकदम से नहीं है. अर्थार्थी का मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता. उसको मटेरियल इज प्रॉब्ली इजीएस्ट वे फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड. मटेरियल मतलब भोजन चाहिए, ये तो उसको समझ में आता है. हाँ, भोजन चाहिए, ये तो बच्चे को ही समझ में आता है कि भोजन चाहिए. जैसे लोग कहते हैं कि काम क्रोध नहीं, सॉरी वो क्या है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष. मैं कहता हूं कि काम पहले शुरू होता है, सबसे पहले काम शुरू होता है. क्यों? क्योंकि बच्चे को कामना तो होती है ना, मिले हमको दूध मिलना चाहिए. तो उस तरह से अर्थ उसको सभी समझ में आता है. जब पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं हो सकता, काम अर्थ हो सकता है. जब किसी के अंदर कोई डिजायर होती है, भावना होती है, उसको धीरे धीरे उसको अर्थ समझ में आता है. तो दूध चाहिए, दूध के लिए उनको रोना पड़ता है, वो तरीका मिलेगा. इस तरह के भाव से मुझे ऐसा लगता है कि ये चतुर्विधा जो है यहाँ पे, चतुर्विधा वो विद्या से आता है जिसको ज्ञान नहीं है. यहाँ विद्या मतलब जिसको उसका लेवल ऑफ ज्ञान जिसकी है, जिसका अपना है, उसके हिसाब से ये भगवान कृष्ण इसको बता रहे हैं कि हम इस भाव से जब आगे बढ़ते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि असुर जो ज्ञानी अगर असुर हो जाता है, बहुत सारे असुर ज्ञानी हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. और जब वो ज्ञानी हो जाते हैं तो बहुत, जैसे उसमें शुक्राचार्य का नाम है, वो असुरों के गुरु थे, लेकिन वो ज्ञानी थे और उनसे ज्यादा पावरफुल कोई ज्ञानी नहीं था उस जमाने में, या अभी भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो और लोग नहीं कर पाते थे. और फिर अगले वाले, मैं बाद में बोलूंगा, अगला 17वां श्लोक जो है वो फिर ये आगे जो है, ये 17वां नहीं, बाकी 4-5 आगे के श्लोक भी ज्ञान की बात हो रही है. इसका मतलब है कि जब आप इन डिस्ट्रेस, जिज्ञासा, अर्थार्थी के ऊपर चले जाते हैं, दिस इज हायरार्की, तब आप ज्ञानी कहलाएंगे. और जब ज्ञानी उस स्तर पर पहुंच जाता है तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं 17वें में और उसके आगे वाले श्लोकों में कि वो फिर किस तरह से
पूर्ण हो जाता है, टोटली एक्सक्लूसिवली, और कुछ रह ही नहीं जाता है, वही उनको सब सर्वप्रिय है। ये बात हम अगर आगे मौका लगेगा तो कुछ और उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। राइट। तो बात यहां आप जो उठा रहे हैं बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल, और जिसको कहते हैं जो एक वैज्ञानिक, जो मॉडर्न जमाने की जो विज्ञान के आधार पर जो बातें होनी चाहिए वो उस हिसाब से आप उठा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो शब्दावली है इसके भी इंटरप्रिटेशंस आप अपने हिसाब से जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ हैं जहां पर भी विचार नहीं हो सकते हैं, उनके ऊपर विचार हो सकता है। वो ट्रेडिशन की बात एक अलग है, वहां हम हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी बात करेंगे। ये बात आपने सही कही कि काम जो है वो पहले इसमें देखा जाता है कि आदमी जब बच्चा तो बाद में होता है बेसिकली, लेकिन बच्चे के रूप में हम जब आते हैं तो हमारा पहले किया हुआ संकल्प है जो हमें यहां लाता है। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हम कहीं और संकल्प करते हैं कि हम इसको जहां मृत्युलोक कहते हैं यहां आने का संकल्प करते हैं, और वो संकल्प फिर किन्हीं जरिए के आधार पर हम यहां आते हैं, और जो संबंधित हमारी मां होगी उसके गर्भ में हम जन्म लेते हैं। तो काम की शुरुआत तो वही हो गई जहां आपने संकल्प कर लिया, वो है यहां। लेकिन कल्याणकारी जो मार्ग है, असल में शास्त्र जो है वो कल्याणकारी मार्ग की तरफ ले जाता है आपको। वो बेसिकली आपको इन सारे डिल्यूजन्स की से हटाकर, अदरवाइज आप यदि देखेंगे जिन आसुरी शक्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, गीता उपनिषद भी जिक्र कर रही है, वो हमेशा ही बलवान रही हैं। और माया का जो पुत्र है जिसको हम मायासुर कहते हैं, वो इतना भारी पावरफुल आदमी है जो कि नई संस्कृतियों को निर्माण करता है। वो एक अलग विश्वकर्मा है। यदि हम हमारी उस साइड को, या दो साइड्स की बात करनी पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि फिर बंटवारा होता है, तो वहां का वो जो विश्वकर्मा है वो, इसके अलावा यदि भगवान शिव की बात करते हैं तो त्रिपुर जिसने बसाया, नए नए इन्वेंशन करते हैं लोग, यही आसुरी शक्ति है। और भगवान क्या कहते हैं कि थोड़ा सा प्रकृति जन्य जो हम रास्ता बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक रहेगा। लवणासुर का जो मसला है, उसने ऐसा एक समुद्र कर दिया जिसमें लवण ही लवण था, और हम कभी बता भी देंगे कि वो कहां है, क्या है स्थितियां। कहीं कोई चीज गई नहीं है, चीजें यही हैं, इसी धरती पर हैं, रूपक बदले हुए हैं और उनके नाम आवरण बदले हुए हैं, सब यहीं पर हैं, अभी भी हैं। कहीं ब्रह्मा जी की वो संतानें गई नहीं है जो शुक्राचार्य आप कह रहे हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं संभवतः आप? जी, मैं कह रहा हूं कि ये बात आपने कहा कि जो निकाला है वो अपनी जगह प्रोफेसर रामनाथ झा को बताइएगा जब आएंगे तो। और लेकिन जो दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो जैसे आपने कहा, मैं उस फील्ड में काम करता हूं ना, कोई चीज को जब हम समझ लेते हैं, टॉक्सिन जो है जैसे को सुर में बदला जा सकता है या एक स्वरूप दिया जा सकता है, जब उसको हम समझ लें और उसको समझा लें और उसको अपने बस में कर लें, जिससे वो, जैसे हम अपने मन को अपने बस में कर लें, उसी तरह से जैसे आपने हमारा एक प्रोग्राम भी किया था, बाचुलाइनम टॉक्सिन सबसे ज्यादा जहर, बड़ा जहर है, लेकिन उसको समझ लिए तो उसी का उपयोग कर ले रहे हैं। तो ये भाव मेरा ये यहाँ पे कहने का है कि असुरों को भी बदला जा सकता है और उस भाव में उनसे उनका उपयोग, सदुपयोग किया जा सकता है। वो भी जब भगवान, जैसे राधा जी ने कहा, जब उनके अंदर भक्ति भाव हो जाएगा, वो उस सृजनात्मक रूप में आ जाएंगे तो उनका उस समय उपयोग बढ़ जाएगा। अभी जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टॉक करने लायक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर ये सेमिनार्स होते हैं इंटरनेशनल, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए और भारत की तरफ से ये कहा कि भाई जो कार्बन आप लोगों ने कर दिया है संसार में, उसका कोई हमें मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात कि जो कार्बन का परसेंटेज है, इसी बात के लिए जो हमारा दर्शन है, जो हमारा शास्त्र है, वो वहीं ले जाकर आपको खड़ा करता है कि दुनिया में जीने लायक, सांस लेने लायक कंडीशंस हो, कार्बन कम से कम हो। शल्यकारी और विशल्यकारी औषधियों, अभी आपने टॉक्सिन और टॉक्सिन से बनने वाली दवाइयों की बात की है, हमारा शास्त्र कहता है कि विशल्यकारी जो औषधियां हैं वही ज्यादा काम की हैं, शल्यकारी नहीं है। हमारे यहाँ कांट छांट को ज्यादा प्रश्न नहीं दिया। आप पढ़ लीजिए सुश्रुत को, और हमने चांडाल की योनि में डाल दिया था हमारे लोगों ने कि नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ऑपरेशंस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। आदमी का जीवन ही ऐसा हो कि उसे ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, और ऐसी दवाई हो जो बाह्य उससे से काम चल जाए। वो लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, कभी आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि डिफरेंशिएट करता है फिर कल्चर्स को, सिविलाइजेशंस को, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे कभी। भाटे साहब कुछ पहले इंटरजेक्शन चाह रहे हैं, तो पहले आप तो या तो इंटरजेक्शन कर लीजिए, नहीं तो आपके फिर टर्न में आ जाएंगे। जी, I wanted to apologize very much because
हमको हमको टाइम का ध्यान नहीं रहा। अमेरिका ऑल दी कोई खास बात नहीं, आप टाइम पर आ अमेरिका गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप टाइम पर आ गए थे। कोई पहले ऐसा हाँ टाइम पर थे, कोई खास बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। हमारा क्रम चल रहा था, उसमें आप आ ही चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। सो अभी आपका टर्न भी आने वाला है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा साहब के पास चलते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आवाज सुनाई दे रहे हैं? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। Okay, very good. Okay. There are Hari Om, Namaskar. There are a couple of things. One is the given the method with which I will have to conduct myself in this discussions. It is about life as well as the management of the life. But in that enthusiasm, or because of our natural training with which we have grown, we should not make a mistake of misinterpreting the actual meanings which are given in the Shastras or Upanishads and then the Brahma Vidya, which is Bhagavad Gita. So constantly I will have to remind myself that I should not be deviating from in my own intelligence or lack of it. I should not give probably my own interpretation or my limitation of the understanding, and we should not give misrepresentation of the actual Shastra for which it is meant to convey what is the exact meaning. And Sanskrit is such a rich language. Each word, each dhatu has got multiple meanings. So we need, unless we have complete understanding of the Vyakarana and then the language, we cannot completely claim to interpret everything in a. That's what I wanted to say in the beginning about myself, and then probably anybody who is trying to give a different twist the way it may occur to them, especially when we are dealing with a Gita Shastra. Having said that, now coming to, of course, my previous panelist, Raadha ji has explained, as usual, the actual meaning as it is. So there is no point in repeating. So I would stick to how we can understand and then interpret it to our own lives. Coming to Devi Hesha Gunamayi, Mama Maya Duratyaya, that's what he's saying. What is Maya? The definition which is given to Maya is Aghatana Ghatana Patiyasi Maya. That is the definition given. That means things which you think otherwise are impossible, the Maya, the magic, the illusion, the trick of the magic makes it appear as if it is happening. Aghatana Ghatana Patiyasi, that which you think is impossible, it looks as if it is made possible. That's what a magician does. A P.C. Sarkar or any good magician or a Paul McKenna, when they do a big magic trick, people who are sitting in the audience will get completely illusioned and mesmerized, and then they get wonderment as if it is real, which is impossible to actually understand for normal people who are sitting. Similarly, when a hypnotist, when he hypnotizes a person, he can get things done, many things done, and the fellow will go into the subconscious, and then he will not realize what is he doing, hypnotized a person. So that is the power of the Maya. So how do we then get over or cross this Maya? Is by knowing the trick of the Maya. Like the moment we know, every magician has got his own tricks up his sleeve. So the moment we come to know, in some of the TV programs, they also show how a particular trick has been performed. The moment the audience or the student of magic, he comes to know that, oh, इतना ही है क्या? Oh, यहाँ से निकल रहा है, ऐसा कर रहा है क्या? The moment we know the trick, that means जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सही ज्ञान about the particular trick behind a particular illusion, how you will say, oh, इतना ही है, अरे बाबा, I thought that it was so difficult. Oh, it is so easy, यहाँ से निकल रहा है क्या? Like that,
a normal Aam Janta will get again wonderment. Oh, this is how it is performed. Oh, इसमें क्या है? Once you got to know about it, it all looks so easy. So that though it is Doratyaya, he is saying that it is so difficult it appears, but the moment you know, you have acquired that particular knowledge behind how this Maya works. How, in order to understand that, you need to understand the Parabrahman and the Purusha, that is about the Lord. So once, and that's why he is asserting here by saying Mameva, the only way, Nanya Pantha Ayanaya Idyate. There is no other way. The only way is to by knowing me, by knowing the trick behind that magic, the trick behind that hypnotism, only you will be able to understand, and probably you will learn, and then you will cross the illusion of the Maya. That is about the Maya. And the second one, which the next thing which he talks about is the four aspects of the people, both sides. In the 16th chapter of Daivasura Sampat Vibhaga Yoga, Lord has dealt extensively, but here he is giving an introduction about the different types. I beg to differ completely with Balramji. He is persisting on that particular thing about Vidhi and all. So there are definitely very clear. I don't want to again create a discussion and a controversy about Vidhi and Vidhaka and all that. Vidhi is about the process of learning and the cognition. Vidhi is about the destiny. So Vidha is about the type and the form which he is talking about. Chaturvidha Bhajante Mam, when he is talking about four types of people. And not only four types of people, he has given introduction to the Daiva Asura Sampad Vibhaga. There are four types of the wrong people, there are four types of the right people. The wrong people are the Duskritino and the right people are the Sukritino. The good deeds as well as the bad deeds. And not only that, I would look at it and then say that it's not only four different types of people, like Radhaji has touched upon, it is about the same person can also be an arti at one point of time, ardharti at a second point of time, jignasu at one point of time, and then jnani he can become eventually. So that process also is possible within one person only, at different stages of life also one can. So now he is talking about this Duskritinaha. Who are the Duskritinaha he is talking about? One is the people who follow the bad karmas and then bad deeds, and then mudhas, the stubborn and then the stupid fellows. Even in the daily lives also we come across these kind of fellows. Naradhamas, Neech, Kaminas, and then people who do anything, corrupt people, and then ruthless and then valueless people we find, the Sarkanse Juda kind of a fellows, and then Asura. Who are the Asuras? So very often we think that those people who are not Asuras are just Asura, those which are not deities are the Asuras. But in Sanskrit, each word has got its own meaning. Like for example, very often we think that Asuras are Rakshasas. But there are Rakshasas, there are Danavas, there are Daityas, and there are Asuras. So there are different gradations and then the synonyms for the same set of the people. So now Asura. So to define Asura, I thought that I would come here and then Asusu Ramante iti Asuraha. Asu means like about living, the prana, just living. While living only they want to enjoy everything. They are the hedonistic type of a people. For them the materialistic right now here, they are like hedonistic and charvak kind of people. They will say that, Pranam Krutva Ghrutam Pibet. That's what they say, that even if you beg, borrow, steal, you have to enjoy. Piyo or piyo maja karo. That's kind of a thing, and they are ruthless and then enjoy. So they, while living only, they want to enjoy everything. They are the people called Ashushu Ramante iti Asura. That is the Vyutpatti and then the meaning of the Asuras. So there the Asuri Bhavas is given the bad people, Duskritina, Mulaha, Naradhamaha, and then Asura. And on the other side, Artha, Jignasu, Arthati, and then Jnani. Artha. In South India, there is a saying, and then they say that what you call as Balaji, Tirupati, and we call as Venkatesha and Srinivasa. Venkata, we call it.
Kalau Venkatanayakasya. For Kali, Venkatesha is the god. That's what Venkatesha is nothing but the form of a Krishna and then Lord Vishnu, ultimately. So in South India, people say that when you get to Sankata, you call for Venkata. you know, so that is generally people say that. Only when you get Sankata, when you think of Venkat. So that they are the arti kind of people. So only in distress and then when there is a dukkha, there is a lot of trouble only they will think of the Lord. The other one are the arthardi. So they also go to Tirupati or some other place, they'll put things in the hundi. Sir, you get me 1 crore rupees lottery, I will give you some 10% of it. There is a quid pro quo. And then you will you take care of me, I will take care of you. I will do this, I will do some dhanam, I will do some temple, I will build that AO and all. So he is basically barter and then business people. Artha ka matlab has got also several meanings. Artha has got a meaning purpose and also money also. On that same very lighter note, ये जो दोनों में वेंकटा और संकटा में कटा है, इसीलिए बाल कटाते हैं क्या? नहीं एनीवे तो बाल कटवाने का भी ये भी कट है. वेंकटा संकटा एक्चुअली इज आल्सो वेंकटा इज द वन हु रिमूव्स ऑल योर ऑब्स्टेकल्स. वेंकटा तो एक्चुअली दैट कट इज कम फ्रॉम संस्कृत ओनली द इंग्लिश वर्ड. ये बाल कटने का बाल जनरली शान की सिंबल होता है. ऐसे ऐसे करते रहते हैं सिनेमा एक्टर्स वगैरह जो बाल लेडीज ऑल्सो दी आई मीन हीरोइंस एंड ऑल दोस पीपल वो बहुत नाज है उनके. हमारे यहाँ भद्र होना तो अहंकार का प्रतीक होता है. सिंह जी उलझा रहे हैं बालों को. No, he is a professor like Einstein. He is kept his he must be look like that. Like intellectuals. They don't bother about all these things. No, but to answer बाल क्यों कटवाते हैं? बाल अहंकार का प्रतीक होता है. बाल अहंकार का प्रतीक होता है. तो वहाँ शिरोमुंडन करने का मतलब है. Exactly. तो शिरोमुंडन का मतलब होता है कि यह अहंकार, यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ एट द फीट ऑफ द लॉर्ड. दैट्स व्हाई ये बाल कटवाते. दैट इज आल्सो एन इंटरप्रिटेशन. कुछ लोग इसको यू कैन फाइंड आउट आते हैं लोग. You can go to Tirupati, you can go to Purana and also that is the significance. Even नारियल फोड़ने का मतलब भी अहंकार को हम फोड़ रहे हैं वहां पे. या नारियल ही क्यों कुछ और क्यों नहीं काटते? ऑफ कोर्स बलि वगैरह चढ़ाते हैं लेकिन नारियल फोड़ने का मतलब भी इज ऑल्सो अबाउट द अहंकार. जबरदस्ती जोड़ रखा उसको बलि से कोई लेना देना नहीं है. एनीवे सो बेसिकली एनीवे लाइटर साइड यू हैव टेकन उदाहरण, बाकी लेना देना नहीं है. आप थोड़ा सा लाइटर नोट पे आ गए इसलिए बलराम सिंह जी भी कुछ इंटरजेक्शन चाहते हैं. आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा था घर पे संभाल के जाना पड़ेगा. महिलाएं बाल जरूर रखती हैं. घर पे जाएंगे तो फिर ये जारी सारा भूल जाएगा. No, only when you go to Tirupati. Basically, if you have got a vow, if you have taken the vow to go and then give that, वो संकट जब हरण हो जाता है तब आप जाके ये सिंबोलिज्म यू गो एंड देन शेव अप. neither he wants your hair. कट गया कहने का मतलब ये है संकट कट गया. सो बेसिकली कहने का मतलब है कि आरती जो होते हैं जो ट्रबल में संकट बने तो आए तो वेंकट बोलते हैं. आचार्य राधा जी को सुन लेते हैं फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा. क्या कह रही है आचार्य? ठीक है. If she wants to interject. Two things I want to say. Number one, that Charvaka's philosophy cannot be called asura. That's not. No, I didn't say that. वो फ्लो में बोल रहे हैं. वो एक्चुअली एक सिमिली दे रहे हैं. No, फ्लो में भी नहीं है. I didn't say that. I said hedonistic. Very clearly. No. Even that, I would beg to differ. If you look at the track record of Charvakas, one of the most respected spiritual thinkers was Ajita Keshakambali by the Buddha. उनका चारित्र इतना गहन था. See, there is a tendency to sometimes, of course, we are not holding you to every word, but Charvakas are known for their probity of character also, because they do not associate. No, I'm just saying, for predominantly hedonistic and materialistic. Charvakas are materialists.
I would not, what happens is, they only believe in the four elements, not one. What is the difference? They are materialists in the sense कि ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसके पार क्या है, they are trying to save us from too much confusion perhaps. You know why I'm saying this is a very huge subject, and also वैसे भी many of the gross, वैसे भी चारवाक जो हैं, जो चारवाकों की यदि हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति से शुरू होती है। हाँ, और ये बृहस्पति सूत्र भी नहीं, they are not available. You know what has happened? तो इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। देवगुरु बृहस्पति जहां पर है वहां कोई आसुरी माया नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती है, and it is not correct to say that at all. It is not correct to say that at all. You cannot say that and calling them asuras is it is not right at all. Who called them? I didn't call them asuras. दूसरे हैं, वो सही है, ठीक है, फ्लो में I have not called them. I have not called them asuras. First of all, so there is no debate on that. I have not called them. Charvakas are hedonistic philosophy. It's a materialistic philosophy. That is one way. That is one way. On the contrary, there could be many interpretations based on the understanding and limitation. No issues. But we are talking about Brahma Gyan and we are talking about Bhagavad Gita here. Let us focus and let us continue with Bhagavad Gita rather than getting stuck with the Charvaka. Okay. I'm also going to. I just need a little interjection here. You know, Balram Singh ji talked very interestingly about priority of instincts. पहले instinct आनी चाहिए, and then like भूख लगती है बच्चे को, then he wants something, etc. Actually, this classification is not about instincts at all. Correct. It's not. It is about questing. It is about meaning, as you rightly said. Person who is concerned with only Adi Potoba is not interested in Vithoba. I would submit. This is so similarly this is when our people have given Brahma Vidya. Sorry. Brahma Vidya का जो ये आपने जिक्र किया है, it is vital because it is to see beyond hunger, beyond satisfaction, and to find out the meaning of all this, and that is the characteristic of evolved species of life, I would say. In that sense, even bacteria are part of this chain, but it is the peculiarity of the humans that seek meaning. And this, also the dharmecha, arthecha, kamecha, mokshecha, they are not types of sadhakas. They are the purusharthas, of classification of activities. I don't want to elaborate on this. Let's, एक टाइम कंज्यूमिंग। दरबा साहब एक मिनट, एक और बात यहाँ रख देते हैं, फिर आप अपने उसको कंप्लीट कीजिएगा। बेसिकली बलराम सिंह साहब भी यही कह रहे हैं, और हमारे यहाँ दर्शन में जो बातें हैं वो बात असल में ये कि ये सारी भगवान की शक्तियां हैं। अब पृथ्वी के एक पुत्र को यदि हम असुर कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी तो असुर नहीं हो गई है, एक बात। दूसरी बात, जो माया है वो भी भगवान की शक्ति है। अब भगवान के 4 हाथ हैं, तो एक हाथ गंदा कैसे कह सकते हैं हम, जब तक कि हम उसको एक्सपीरियंस न कर लें। और बात आपने राइटली कही है कि ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो सारी चीजें एक इल्यूजनरी जो हैं, हमको जो आकर्षित करती हैं, वहां हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इसको दुर्दम्य कहा गया है, जिसका दमन ना हो सके, जिसका हम पार ना पा सके, इसलिए उस शक्ति को दुर्दम्य शक्ति कहते हैं। लेकिन वो शक्ति तो है, और वो शक्ति भगवान की ही है, इसलिए वो कोई उस तरह की बात नहीं है उसमें कि नकारात्मक बात है। हाँ, जान लेना जरूरी है। एक्सपीरियंस की जो कैटेगरी, जब वैज्ञानिक काम ही जान लेने का है, वैज्ञानिक तो अपना परीक्षण करते रहते हैं, तो वहां चीजें हैं। लेकिन जी कंप्लीट करें। जान लेने के बाद बुद्धि की discrimination also is important. That's what Bhagavan keeps on talking about. It's not only just about learning about all sorts of things, like making experiments to know and then have sex and indulge in sex or sexual activities.
and then get stuck with that. But you just know about it, but don't get dragged about it, because if you have chosen the spiritual path. So that's what, okay, just because of knowing, and people who are on the divine path, they would not give much credit, much importance to the lower instincts and then the materialistic pursuits. Having said that, to link it to, okay, getting into philosophy, of course, you people have been doing it, and then very often, whenever I indulge, I try to give it to the practical twist. I would like to, as a management person, first of all, I have to make a disclaimer, which all It's of a you debate, know. sir. None of us are acharyas. None of us are acharyas. So am I. I know. I am not a Sanskrit scholar. I am not. I am a management person and a practitioner and a professor. Now, but I had the good fortune of learning Sanskrit, and then from childhood, last 55 years, Bhagavad Gita. So with that, I am also using this opportunity to, as a seeker, as one of the welcome. Artho Jigyasu Ardharthi, and then trying to be Jnani. एक मिनट So सुनिए, anyway, एक so मिनट I सुनिए, remember. सुनिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक कहावत है कि कबड्डी में काका जी नहीं होते हैं। Okay. ठीक है, तो आप डिबेट में आए हैं, वो योच आपको इधर उधर की बात जो सबको सुनना है तो भी तो डिबेट है, अदरवाइज काय की डिबेट है? Of course. No, of course. Like last week's. In that sense, वो हमारी No. Last week we had a very rochak and romantic discussion, and I would definitely look forward, and always it is better, and the churn on gives. Yes, definitely. Churn only gives, but at the same time, context, text को समझना first, and then context को समझना भी, ये दोनों की बहुत आवश्यकता होती है. Having said that, okay, coming to link it to practical, some of you, if you have come across some management principles, and Khandelwal sub will definitely know it. There is something called in organizational and business, there is something called BCG matrix, which is a Boston consulting group, which talks about again 4 types of people or organizations. The stars, the dogs, the cash cows, and then the question mark. So the stars are the jnani kind of people, and the dogs are the artis, and then the cash cows are the arthartis, and the question marks are the jignasus. On a lighter note, BCG Right. matrix. आपके Similarly, पास में दूसरे so round that's how we can understand. फर्स्ट राउंड का टाइम आपका पूरा हो चुका है, सेकंड राउंड में आते हैं आपके पास, और अब हम चलते हैं भाटे साहब के पास में। भाटे साहब, स्वागत है आपका। खंडेलवाल साहब बीच में चले गए थे कहीं, स्वागत है आपका। आ गया वापस तो अब आपको लेंगे, फिर पहले भाटे साहब बोल लेते हैं, फिर आपको लेंगे जी। या राधा जी कुछ बोलना चाहती है? 1 second, शी इज होल्डिंग हर हैंड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वो वैसे ही बैठी हैं अब है मुद्रा में। The second point is, when we're talking about here, let's not connect it with ego at all, because number one thing that we were taught in the ashram is that giving your hair away is because you give away your tamasic nature. That is for the tamas. This is dead protein. ये हमारे शरीर पर तमस है, और जो मुंडनम सेरेमनी भी जो होती है उसमें बाल कटाए जाते हैं, बिकॉज तमस को आपके शरीर से हटाया जाता है। And long hair is tamasic. One second, please. Let me finish. 1 second, please. Let me finish. Yeah, please. Second thing is that when we talk about long hair, we look at all the idols. When we decorate our idols, हम उन सबको लंबे बाल देते हैं. Lord Krishna will give him long hair. We give all the devis long hair. So it's not right to connect it with ego at all. So please use. And that's your opinion. Okay. Yeah, That's your opinion, so you can keep it that way. बिल्कुल ठीक Yeah, no problem. बिल्कुल Yeah. जी। Okay. Bhate साहब। Now let me. Yeah. Last time, इतनी बहस हो रही है. I think last time I did mention that perhaps we need internal interfaith. so let me talk about my own position. यही तो विचार प्रवाह है ना हमारा काम यही है। हम किसी भी तरह से ये नहीं कहते कि दिस इज द कमांडमेंट, यू हैव टू फॉलो। नहीं, हमारा दर्शन ये नहीं है। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की लंबी चौड़ी परंपरा है, भगवान से भी सवाल हुए हैं। सबसे पहले यदि हम संवाद देखते हैं तो भगवान शिव का और पार्वती का संवाद हमारे सामने है, पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई तरह की मनाही नहीं है,
हाँ बिल्कुल, उसमें कोई चकराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरफेस Yes. कोई So- इंटरफेस वगैरह की उस तरह की हमें जरूरत भी नहीं है, हम वो ऑलरेडी इंटरफेस है हमारे में। नहीं, सबको सबको ज्वाइन कर लेना यही इंटरफेथ है मेरे ख्याल से। फेथ एक अलग, Okay, असल so में let क्या me- फेथ जो है ना वो कहीं आपको इंटर होने देती नहीं। फेथ जो है वो अपने let आप me- में डेरोगेटरी वर्ड है, जिसने Sir, फेथ में आ sir, गया I वो just want- वो आपको कहीं अलाउ नहीं कर रहा है, फिर वो अपनी फेथ में है। जी कंप्लीट करेंगे। So, I so just want to let me say put- I appreciate what Acharya ji said. You know, this is not a trivial point what she is highlighted. And also, sir, whatever you said, this is, as Subhash ji is saying, this is the essence of a debate where, you know, we are discussing things. We are not in opposition, or, and I think very important points are being made, and it's not really about opinions, but trying to get at various facets of a marvelous truth. That is all I would say, you know. Yes, so let me put forward my own position, and what I feel is that there are these four categories. A lot of discussion has already taken place on them, but from a personal point of view, I think I am involved in all the four. That is, when I am worshipping, I am Artha. I do my worship with extreme amount of eagerness, and go into dhyana sadhana, and I have been able to reach the level of samadhi many times. So while I'm worshipping, I am Artha. Okay. Then I also need to know what am I experiencing in samadhi, what is the meaning of that, and also need to understand the philosophical basis of the spirituality, Hindu spirituality I'm talking about in particular. And so whenever I want to know the philosophical background and the basis of whatever I'm doing, then I am a jitnyasu. And then अर्थार्थी तो हुई. I mean, I also do want to live a good life. That's why I'm living in America. Come on. So living a good life is not a sin. Trying to give yourself all the pleasures of that are available, they are also created by God. So obtaining those pleasures is artha, and गुड लाइफ जो at है that आपकी, time, ये yeah. मैटर ऑफ डिस्कशन है। Yeah, it is a matter of discussion. I'm just putting down my position. So there I am Artharthi. But Artharthi also I can interpret in another way also. क्योंकि क्या है कि अगर हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, वो भी अर्थ ही होता है. And having a desire to obtain the philosophical meanings, the basis of all these philosophies, is something to be acquired, and whenever we say acquired, वो भी अर्थ ही हो जाता है. And there, for knowledge acquisition, we have to be artharthi. So then I am artharthi, and then I don't know whether I am jnani or not. But it is true that I've been practicing dhyana sadhana for last 49 years, and during this long journey, I have had many spiritual experiences. That remains a fact. Now, with the help of these experiences, have I become a perfect jnani? I don't think so. That is not true. But I can call myself at least a partial jnani, because when I go into samadhi and have a spiritual experience, उसमें से ज्ञान तो मिलता ही है. So I am a partial jnani, maybe. So my point is यहाँ that भगवान जो है, all these things- यहाँ आज जो हाँ, भगवान जी. कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और इसको जी. देखते हैं. आप जैसे जी. इंटरफेथ की बात करते हैं ना, तो फेथ मानने जी. वाला जो व्यक्ति है वो फेथफुल होता है. आज भगवान जी. क्या कह रहे हैं, आप देखिए जरा. हाँ, आप देखिए जरा भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे फेथफुल नहीं चाहिए. मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो ज्ञानी है. वो फेथफुल को तरजीह नहीं दे रहे हैं, फेथफुल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं. वो That is the difference. I'm totally in agreement. Yes. That is the difference I'm between the 100 cultures. That is the difference between the Correct. literature, scriptures. Yes. Is Yes. jnani, I am it is 100%. not about the scholarship. No. It is not about the scholarship and the knowledge. It is about the Brahma Jnana. It is about the one who has understood me and my consciousness. So तो माया को every जान लेना भी है. knowledgeable person
उसमें माया को भी जान लेना है, आसुरी भाव को जान लेना भी माया है। को, correct, but it's not about just a learned man or a knowledgeable man or a scholar. That's not a scholarly हम knowledge. समझ When you गए, say आप ये कहना ब्रह्म चाह रहे हैं कि आपकी हाँ पीएचडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, करेक्ट। ओके, और किसी का भी क्वालिफिकेशंस का कोई लेना देना नहीं है जी। भाटी साहब को कंप्लीट कर नहीं 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 नहीं, don't go that far, please. You know, this Same this thing. And this ये is one बाल of the जो है, characteristics. You know, we have to No, be no, very what we- modulated. You know, in our generalizations. but he is The idea is not to demean pursuit of knowledge. I What understand degree? क्या हुआ जो that प्रोवोकेशन में आ Nadkarni जाए? साहब, वो ज्ञानी क्या नहीं हुआ नहीं जो प्रोवोकेशन में आ जाए? नहीं आ रहा हूँ, प्रोवोकेशन में नहीं आऊंगा। आप टू मेक इट रोचक, यू कैन ट्राई एंड देन आई एम पार्टिसिपेटिंग। यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए सुनिए, ये सब बातें चल रही है, इसको आप उस तरह से ना लें। वो नाडकर्णी साहब भी आपको नहीं कह रहे हैं, टू मेक इट वेरी क्लियर टू आवर व्यूअर्स, that's why we are to interacting. make it very clear, And to make it very clear, even the hair, one second Vithal ji, this hair thing also is Subhash has brought it. I have not brought on my own about it. क्यों नहीं ला रहे हैं? तो लाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप लाए हैं। इतना लंबा डिस्कशन क्यों रखते हैं? अदरवाइज तो 15 मिनट में ही हम देखिए सुनिए, आज हमने कितने श्लोक आप किए? लाए हैं 4 श्लोक को 15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो ही नहीं सकता। Correct. 15 मिनट में हम करके That is what I said. Let's focus on the Bhagavad Gita, first. And, there are, all of us have lot of ideas and opinions and characterizations. If we get into the various aspects of the verses that are under hand, so if we do that, we'll be able to move on. As a writer and a journalist, I know the spectrum of, vivad that can come. And all of you are learned, I am also aware. panelists. Yeah. Of course, yes, sir. I Yeah, completely so the Go ahead, spectrum, go the ahead. and spectrum we are also needs dealing with. all the. जी जी It's not All- about us. It's not about personal. Nadkarni sahab. It is about the given topic. It's about the given topic. नाडकर्णी साहब। Yes, so Nadkarni साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि the spectrum has multiple frequencies, but all the frequencies when they are put together, it becomes white light, and that's what physics tells us. So Balram Singh, so I'm also a technologist, just like Balram Singh is a scientist. I'm also a scientist come technologist. And so, that's why I talked about white light, and I perceive interfaith as white light. Okay, so what I was trying to say is that I can go into all the 4 positions of Artha, Jidnyasu, Artharthi, and Jnani one by one. Although these are 4 different positions, it is possible for us to remain one individual and go into all these positions. And that is the combination of these positions that I was trying to point out. Also, I would like to add one more point. I am a follower of Kashmir Shaivism in the tradition of Pandit Gopinath Kaviraj ji. और वो जो ट्रेडिशन है उसमें हम भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते, हम देवी की उपासना करते हैं। भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति उसकी उपासना कश्मीर शैविज्म में होती है, एंड दैट इज द ट्रेडिशन आई बिलोंग टू। सो आई एम वर्शिपिंग देवी, आई एम नॉट वर्शिपिंग भगवान कृष्ण। तो मैं नराबधर्म हो गया क्या? नहीं, because everything is white light, and that is what I understand. And so worshipping Devi Tripura Sundari is also the same as worshipping Lord Krishna. This is my understanding, and that is because of the interfaith, internal interfaith, you can say. And so that is another point that I just wanted to mention. Thank you. ओके, ठीक है। खंडेलवाल साहब, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार साहब, जय श्री कृष्णा, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण जो हैं, ये 7वें अध्याय में एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं।
सबसे पहले तो वो नास्तिकों के प्रश्न जो हैं, जो हो सकते हैं, उनका जवाब देते हैं कि ईश्वर होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, कहाँ उसको आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसमें जो है वो बताया। बिजनेस और मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो श्री कृष्ण जो हैं एक बहुत अच्छे मतलब कंसेप्ट मार्केटियर की तरह ईश्वर का कंसेप्ट जो है उसको बहुत इफेक्टिवली मतलब मार्केट कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग वो कर रहे हैं और पॉजिटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। अधिकतर श्लोक जो उनके हैं वो अपनी विशेषता को बताने के हैं। उन्होंने किसी भी अपने कॉम्पिटिटर की आलोचना को से प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने बताया। देखिए, मैं पिछली बार उपस्थित था लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज के कारण मैं अपनी बात नहीं कह पाया। कुछ महत्वपूर्ण बात है इसलिए मैं आज संक्षेप में कहना चाहूंगा। श्लोक 10 और 11 में उन्होंने राग और काम रहित काम की बात उन्होंने कही है या धर्म सहित काम की बात कही है। यहाँ एक वैचारिक परिवर्तन को वो दिशा देते हैं। अधिकांश जगह ये कहा जाता है कि आपको अगर सुख शांति चाहिए जीवन में तो कामना रहित हो जाइए, लेकिन यहाँ इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच दी है, डिफरेंट कंसेप्ट दिया है कि कामना की भी आवश्यकता है, उसके बिना विकास नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कामनाएं हो आपकी वो धर्म की मर्यादा में होनी चाहिए। जो अधर्म की परिभाषा में आते हो उस तरह की कामनाओं का वे समर्थन नहीं करते। और इस दृष्टि से ये श्लोक बिजनेस एथिक्स के क्षेत्र के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवसायी को, एक प्रबंधक को कामनाएं रखनी चाहिए लेकिन वो नीति की मर्यादा में रह करके रखें। तो आधुनिक समय में जो मैनेजमेंट फील्ड की बहुत बड़ी जो समस्या है अनएथिकल बिहेवियर की, वो इससे सॉल्व हो सकती है। जो कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, जिससे बहुत बड़ी बर्बादी होती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे सब प्राइम क्राइसिस आया यूएसए का, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इस तरह की समस्याओं का जो समाधान है वो श्री कृष्ण भगवान इसमें देते हैं कि आप कामनाएं तो रखिए पर राग द्वेष रहित होनी चाहिए और धर्म सहित होनी चाहिए। वही कामनाएं आप रखें, उसी से सुख शांति होगी और विकास होगा। इसके बाद वो 3 गुण की बात करते हैं 12वें और 13वें श्लोक में। तीनों गुण भी मुझसे ही बने हैं, वे मुझ में भी हैं, मैं उनमें नहीं हूं। तीनों गुण जो है उससे ही जगत बना है और मैं स्वयं जो है अव्यय हूं, अविनाशी हूं। और जिसे यह जगत नहीं जान पाता है, क्योंकि जगत जो है इन 3 गुणों से प्रेरित जो माया है उसमें उलझा हुआ है, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पाता। मैनेजमेंट की दृष्टि से यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मैनेजमेंट में तीनों गुणों की आवश्यकता है। एचआर मैनेजर को गुणों के अनुसार जो है कार्य का विभाजन करना पड़ता है, व्यक्तियों का वर्गीकरण करना पड़ता है। यहाँ 3 गुण का जो सिद्धांत है श्री कृष्ण गीता में, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे अलग प्रकरण भी है इसका, वहां हम ज्यादा बात करेंगे। लेकिन 3 गुण जो हैं इनके ऊपर इनकी भी सब कैटेगरीज करके इनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक किया गया है। इसके लिए हमें मनुस्मृति का अध्ययन जो है करना होगा। वहां जैसे कि सत्वगुण है तो सत्वगुण की उच्च स्थिति, मध्यम स्थिति, लोअर स्थिति, इसमें व्यक्ति क्या बन सकता है, किस कार्य के लिए वो योग्य है। इसी तरह से रजोगुण की उच्च स्थिति, मध्यम स्थिति और निम्न स्थिति
जो है वो किन कार्यों के लिए व्यक्ति को सुटेबल मतलब बनाती है। इसी प्रकार से तमोगुण की उच्च स्थिति, मध्यम स्थिति और निम्न स्थिति एक व्यक्ति को किन कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है। तो व्यवसाय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दृष्टि से किसी भी गुण को रिजेक्ट नहीं किया गया है। तीनों गुण जो है इनकी आवश्यकता मैनेजमेंट को होती है और कार्य के अनुसार जो प्रकृति जिस तरह की आवश्यक है उस तरह के व्यक्ति का चुनाव उसके लिए किया जाता है। और मनुस्मृति में इसको स्पष्टतः लिंक किया गया है कि किस प्रकार के कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त रहता है। तो नई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दिशा इसके द्वारा निर्धारित हो सकती है। जो वेस्टर्न हमारे थिंकर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये इंडिया का एक अद्भुत योगदान होगा, ओरिजिनल योगदान होगा, अगर इसको हम आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से 14वें श्लोक की बात करें कि मेरी माया 3 गुणों से युक्त है, यह अगम्य है। जो प्राणी मुझे भजते हैं वे भव से पार होकर के मुक्ति को पा लेते हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए गुणातीत स्थिति में जाना होगा, जिसके लिए आगे अलग एक जो पृथक प्रकरण में उन्होंने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है। 15वें श्लोक में जाकर के वो मतलब जो है वो मतलब कॉन्ट्रेरी चीज दे रहे हैं, काउंटर मार्केटिंग जिसको कहते हैं, ये नेगेटिव मतलब मार्केटिंग, उसकी बात पर आते हैं कि दुष्कर्मी मूढ़ और नराधम लोग हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो भगवान को नहीं बसते। माया ने उनका ज्ञान हर लिया है और वे आसुरी भाव में रहते हैं। अब अभी अपनी आज की चर्चा में ये बात कही गई कि ब्रह्मा जी ने ही असुर भी उत्पन्न किए, दानव भी, राक्षस भी उनने उत्पन्न किए हैं, देवता भी उनने उत्पन्न किए हैं, मनुष्य भी उनने उत्पन्न किए हैं। यहाँ थोड़ा सा मतलब करेक्शन जो है मैं मतलब सजेस्ट करना चाहता हूँ कि दानवों की और देवताओं की जो उत्पत्ति है उनमें पिता तो दोनों के जो है कश्यप ऋषि हैं, माताएं दोनों की अलग हैं। दिति जो है उनसे राक्षसों की उत्पत्ति बताई जाती है नहीं, और माता से दैत्य उत्पन्न हुए हैं। वो अलग सब्जेक्ट चला जाएगा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो मैनेजमेंट का क्या इसमें वो है वो करिए, फिर उसमें हम पढ़ेंगे तो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। दिति से दैत्य पैदा हुए हैं, अदिति से आदित्य पैदा हुए हैं, वो हम बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, वो जीनोलॉजिकल बात अलग चली जाएगी जी। तो अब जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, इस तरह का 4-fold क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट में कई जगह मिलता है, BCS मैट्रिक्स में भी है और भी अनेक उदाहरण इसमें मिलेंगे कि जिसमें 4 तरह का वर्गीकरण किया गया है। और कर्मचारियों को भी 4 तरह के वर्गीकरण में जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रकृति के होते हैं, कुछ जो है वो इनोवेटिव प्रकृति के होते हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ जो है वो आर्त हैं, जो मतलब कष्ट अनुभव करते हैं, वो मैनेजमेंट की मदद इसलिए चाहते हैं कि उनके कष्ट को दूर किया जाए। तो ग्रीवांस रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है उनके लिए बनता है। इसी तरह से अर्थार्थी हैं जो हमेशा मैनेजमेंट से कुछ सीख करते हैं बेनिफिट, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है संस्था के विकास में, उन्होंने अगर प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो उनको इस प्रकार का बेनिफिट सीख करने का मॉरल राइट नहीं है। इस प्रकार से कोई संस्था सरवाइव नहीं कर सकती। तो सुकृत भी हैं और दुष्कृत भी हैं, और मैनेजमेंट में भी सुकृत और दुष्कृत की प्रॉब्लम दोनों की है। दोनों को HR मैनेजर किस तरह हैंडल करता है ये समझने की बात है। ज्ञानी को सबसे उत्तम बताया गया है, वो समदर्शी है और योग युक्त रहता है, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट में वो व्यक्ति जो मतलब मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को समझता है और लीडर को समझता है और उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और बाकी के साथ समदर्शी टाइप का व्यवहार करता है, उसको आप ज्ञानी व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं। अब ज्ञानी भक्तों के जो उदाहरण दिए गए उसमें गोपियों का नाम लिया गया,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शुकदेव, नारद, सनकादि, भीष्म, प्रहलाद ये सभी ज्ञानी भक्त थे, परम ज्ञानी भक्त थे। ये इनकी सूची है, इनको भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गौ सेवा के प्रकल्प के अंतर्गत गोरस का एक उत्पाद हमारे व्यूअर्स के लिए। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। 60-60 सेकंड का राउंड रहेगा, ओपन राउंड है और बिल्कुल प्रिसाइसली 60 सेकंड। प्रोफेसर बलराम सिंह साहब। Oh, I am the first. Well, I was thinking I will be आप the. रुक जाइए, फिर मेरे को लगा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आपकी उंगली से देखी थी मैंने। पहले आचार्य जी को ले लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आचार्य जी को कहने, नहीं तो मैं तैयार हूं, कोई बात नहीं। Okay, so I'm going to take the 17th verse quickly. We're going to talk about the Jnani Bhakta who is different from others because there's no sorrow for a Jnani because he gains oneness with that ultimate bliss consciousness. Bhagwan says that a Jnani is very dear to me. There is nothing between me and him. There is no cloth, there is no rosary, there is no Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanmaya or Anandamaya. The love between Ishvara and his Jnani Bhakta is beyond words, actions or even thoughts, and that is because consciously Bhagwan and Bhakta are one and only Bhagwan remains. Ek Bhakti Vishishyati, that Jnani or a lover Bhakta has a clear inner self, neatly stationed in Ishvara alone. He has no personal desires and that is why he is supreme. Mama Priyaha, I'm very dear to my Jnani Bhakta because he doesn't care about himself at all and he has infinite love for me. Actually, everyone is dear to Bhagwan. But that Bhakta who doesn't care about himself, he doesn't see any need in this samsara and only sees Ishvara as with the pure inner self and dearest. By knowing Ishvara one, since there is no end to love and this is the truth and omniscient, love is the beauty of Ishvara and his Jnani Bhakta. Bhagwan calls his lover Bhakta as a Jnani Bhakta because after having this knowledge of seeing Ishvara as everything and everyone, there is no need of any other knowledge. There is no other truth prevalent except Ishvara is pure and truth of everything. Love and Ishvara cannot be separated. Either you know love and you will know Ishvara, or you know Ishvara, you will know love. It's like saying that if you want to cure the madness of a mad person, get him married. So you get a mad person married and he gets rid of his madness, or you get him married and the madness goes away. So that's the same thing. Here we're talking of Jnani and love, I guess. ठीक है, नाडकर्णी साहब। If you want to, there is a conventional method of getting people out of depression. Sleep deprivation has been also tried. And I'm not making it very lightly, this thing. You know, with sleep deprivation also, the setting of the melatonin cycle and all takes place. That's just an interesting aside. I want to make a briefer point, and that briefer point is that Bhagavad Gita is articulating universal truths. And in this universal truth, if you take, for instance, what is good and bad, we can say that what is bad for asuras is good for suras, or what is bad for suras is bad for asuras. That would be a very limited way of looking at things. Though philosophers and religious authorities have been debating on this question of morality, that is, what constitutes good and evil, for aeons now, there I submit is an easier way to define good. Good is that which protects conscious creatures from harm
and evil is that which subjects them to harm. Good is also that which is just and fair, and evil is that which is unjust and fair. Now, this unjust and unfair obviously depends on the context. How much is fair? How much is unfair? So that is why you need one of the pillars of Purushartha is Dharma. This is also lust unbound is not acceptable. So it has to accord with social norms, with ideas of fair play. That is all this is about. You know, the conflict between Kauravas and Pandavas essentially is that they are from the same genealogical branch, but look at their values and look at what triumphs in the end. It is, you know, where there is Krishna and Arjuna, that is where Shri and Vijay are there. It is because they represent fairness and goodness. And I think we should not deviate from this clarity that has been given to us by this brilliant Upanishad. प्रोफेसर सिंह साहब के पास चलते हैं जी। मैं एक फोटो दिखाना चाहता था, अभी मैं इटली में था और ये फोटो बड़ी आपको अगर समझ में आता, देखिए क्या लिखा हुआ है। मंदोदरी बुक स्टोर। राइट। आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जो डॉक्टर श्रीराम की बात थी, जो मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2002 इसके पहले वन मोर थिंग आई वांट टू से, जो धर्म की परिभाषा दी गई है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस्य ससिद्धि सधर्म, वो ये वैशेषिक फिलॉसफी की बात है जिसमें समय और काल और देश और काल का वर्णन किया गया है कि देश काल के साथ चीजें बदलती हैं। अगर ये प्रोफेसर श्रीराम ये कहना चाहते हैं कि हमको एकदम बिल्कुल जो लिखा है उसी तरह से सोचना है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, ये वेस्टर्न परंपरा है जो एक बार लिख दिया गया, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो दिखाई पड़ रहा है युद्ध में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण ने वहीं पे सवाल कर रहे हैं, तो ये मुझे आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, नाउ दैट ही सेड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आई थॉट अबाउट इट। पाणिनि जो है संस्कृत का ग्रामर जो है परफेक्ट माना गया है। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की MIT के, उन्होंने कहा है कि और ऐसी कोई भाषा है ही नहीं संस्कृत जैसी भाषा, वो बिकॉज ऑफ पाणिनि ग्रामर। उन्होंने अंग्रेजी को सिद्ध करने की कोशिश किया, कभी हुआ नहीं, लेकिन पाणिनि ग्रामर जो है 2500 साल की पुरानी है और उसमें हम सिर्फ सुनते आए हैं, समझते आए हैं, करते हैं। उसमें ये निश्चित है कि वेद में बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग चर्चा की है, बहुत ज्यादा उपनिषद सारे चर्चा के विषय, सवाल के विषय हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में जो कि इसको इस तरह से कह दिया गया है, भारत की परतंत्रता की जो बीज पड़ा है 2500 साल पहले ही पड़ा है। अलेक्जेंडर आया है, उसके बाद सारी चीजें आई, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम आज भगवत गीता को जीसस क्राइस्ट के जैसे मान के किताब को रख दिए कि उसमें एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इससे हमारा पतन हो रहा है, हमारा उत्थान नहीं हो। ये बात कहना हो सकता है। हमारी भारत की जो आज की परंपरा हो गई है, ये जो दर्शन है, वो हमने दर्शन जो भी है, वो कांत हैं, हेगल हैं, अरिस्टोटल हैं, उनकी बातें हम लोग पढ़ाते। भारत का कोई पढ़ाता ही नहीं। अभी मैं इसके पहले बैठा था एक लेक्चर में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा था, सारा चीज बताया जा रहा है। भारत का दर्शन जो है विदेश के दर्शन के हिसाब से, उनकी समस्याएं, उनकी सोच हमको इंपोर्ट करके ये कह रहे हैं हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, जो लिखा गया उसी को बोल सकते हैं। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान, मैंने अपने एक लास्ट बात में कहना चाहता हूं, एक चीज हम क्लियर कर देते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम गीता उपनिषद है, और गीता उपनिषद नाम तो मतलब क्या, गीता जी का नाम ही गीता उपनिषद है, लेकिन इस प्रोग्राम का नाम जो है वो गीता उपनिषद के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का प्रोग्राम है। और उपनिषद का मतलब ही है सवाल पैदा करना, सवाल पूछना। जी हाँ, जी तो जी, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं उसमें। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बात एक कह देना चाहता हूं कि इसमें जो 15वें श्लोक में, उसमें किसी ने कहा नहीं अभी तक, इसमें लिखा हुआ अत्यर्थम, मतलब अर्थ यहां भी समझने, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तभी होगा जब आपको अर्थ समझ में आएगा। और अर्थ कहां समझ में आए? देश और काल समझेंगे, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक, मैंने अपने एक विद्यार्थी को अभी हाल में कहा था, PhD उसने
खतरा एंड शी हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, मैंने कहा उसको कि भाई तुम ऐसा करो, मेरे 200 पेपर पीयर रिव्यूड हैं, छाप लो सारा किताब, उसको सुनाते रहना सारी जिंदगी। अब बाकी क्या कहेंगे, विज्ञान की विद्यार्थी अगर मेरी सारे पेपर छाप के, किताब छाप के वो सबको सुनाती रहे, बोलेगी कि एकदम मैंने तो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें। लेकिन ऐसे विज्ञान समाज का विकास नहीं होगा, वो होगा कि आप मेरे जैसे साइंटिस्ट बनिए और आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उसके लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा कि अनुभूत ज्ञान की हमारी परंपरा है, और अब कुछ हो गया है वो एक अलग बात है। बाकी अनुभूत ज्ञान ही हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है, न कि तोता रटन। बिल्कुल, सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके उसमें हैं। दरबार साहब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। जी ठीक। I don't want to get into any further controversy, even for I know, even for making it interesting. Basically, सनातन जब कहते हैं हम लोग, एंड सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। सो नॉट परिज्ञान और हमारा खुद का विज्ञान, बट डेफिनेटली आई एग्री, बिकॉज essentially I am also a Western educated research scholar and a practicing leader and a manager. So I cannot, I am completely in agreement with your line of thinking, and in that sense I have made a disclaimer that I am not a jnani, and then I am not giving vishesh tippani about Bhagavad Gita and all. It is about jignasu drushti, and I am getting also an opportunity to learn. Having said that, but here only Bhagavan himself has किसी भी तरह से नो किसी भी तरह से कोई ज्यादा किसी के समर्थन विमर्थन की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात कहिए, किसी के समझ में आएगी मेरी बात, समझ में आए कोई बात नहीं, वो अपने आप इंटरप्रेट करेगा आपकी बात को, वो जांचेगा आपकी बात कितनी सही है, कितनी आप सही डेप्थ में बात कर रहे हैं, उसको जांचने दीजिए। आप क्यों अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं? आप तो बोले anyway. जो आपने अनुभूत किया है, जो आपने पढ़ा है, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। Absolutely. So coming to the last एग्रीमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। Absolutely, I agree with you, and then I shall maintain that. And I have good. You are free here to speak what you think. Good. So here I am saying, the way it is understood, the last shloka is he is very clearly here itself. He has given an answer to some of the doubts and queries that we have raised today. He is saying Nitya Yukta and Eka Bhakti. So it is a single-minded focus about knowing the real form and then the real knowledge, the samyak knowledge. That is only possible to a person who is unconditionally and single-mindedly focused. So when he says Eka Bhakti, and then he never said that, you approach, but though he has given full opportunity for Arjuna and Arjuna ki zariye logon ko bhi, and all of us have got, because it is essential nature of our Sanatan Dharma that right. It all is about inquisition and jignasu. What is our 60 seconds? Sahmat hu main. But we need to understand the right knowledge in the right perspective as it is prescribed. Next episode में complete कीजिएगा, आज का time नहीं है। What is our 60 seconds? Yeah. In 2 seconds, let me just say I agree with Balram ji. He already talked about Panini, and I just want to add a footnote to what Balram ji already said. He mentioned Panini, but Panini is for grammar, for the Vyakarana. There is another great treatise which is called Nirukta, and that tells us how to interpret the meanings of words. And even Nirukta is, of course, this is 5,000-year-old science, and today's world we need to even reinterpret both Panini as well as Nirukta, and for that I have been studying Western linguistics a lot, and there are issues, there are topics involved there, hermeneutics, pragmatics, वो सब मैंने जान लिया है, and I try to interpret even the Panini's grammar and Nirukta both in the light of hermeneutics and pragmatics. Right. उसके बाद में बातें करेंगे. Right. खंडेलवाल साहब 60 seconds only. जी इसमें देखिए कि 4 तरह के भक्तों के बारे में बताया गया है, और इससे ये लगता है इस क्रम से
कि इससे भक्ति का क्रमिक विकास होता है और सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त को उन्होंने लास्ट में जो है 17वें श्लोक में कहा है। लेकिन इसका एक अपवाद हमें शास्त्रों में मिलता है। बुआ कुंती जो है वो उनसे ये प्रार्थना करती है कि मैं संकट चाहती हूँ, आप मुझे संकट दो, मैं आर्त बनी रहूं, तो उससे मुझे आपकी याद बनी रहेगी। वो न तो जिज्ञासु बनना चाहती है, न वो अर्थार्थी बनना चाहती है, न वो ज्ञानी बनना चाहती है, तो आर्त भक्त ही बनना चाहती है ताकि भगवान की स्मृति उसको बनी रहे। तो इसके विषय में अगर पैनल वाले कुछ कहना चाहते हो तो कहें। ये एपिसोड में बात करेंगे। एक्चुअली हर भक्त का अपना अपना एक नजरिया भी होता है। एक बात हम यहाँ जरूर कह देना चाहते हैं, ये आप वाली बात नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे। एक बात हम, जैसे प्रोफेसर बलराम सिंह साहब कह रहे हैं कि 2500 साल पहले ही गुलामी के बीज या इन्वेड के बीज पड़े थे, इसके बारे में मतांतर की बात बहुत सारे लोग सोचते हैं। इस बारे में एक एपिसोड में हम बात भी करेंगे। आज हालांकि लेट चर्चा उन्होंने की है, एक बार हम शायद पहले एक टच तो कर चुके हैं इस सब्जेक्ट को। कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी देश हो, कोई बाउंड्री हो, यदि वो फलती फूलती रहती है तो उसके बगल अगल में जो लोग रहते हैं वो उसको हराने की तैयारी में भी जुटे रहते हैं सतत रूप से। और ये लोग जो होते हैं वो थोड़े शिथिल हो जाते हैं। आज चाहे हम रशिया जैसी माइटी पावर को देखें, चाहे पहले की माइटी पावर, आज अमेरिका कई जगह से प्रॉब्लम में आता है। सो दैट सेम थिंग हैपेंड विद अस एज वेल। सो उसमें हमारा लिटरेचर, हमारे स्क्रिप्चर्स को हम दोषी न ठहराएं, बजाय ये देखें कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ यह है कि दुश्मन ने आपसे ज्यादा तैयारी की थी और आप उसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बारे में, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके बारे में एक एपिसोड ये बनता है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है और हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए कभी इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के दिमाग में ये बहुत गलतफहमी है कि क्या हुआ होगा, किस तरह से, वो हम ही को दोष देते रहते हैं, हम ही हमारे कोई गालियां देखते रहते हैं हम, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। सेल्फ एक्यूजेशन इतना भी नहीं होना चाहिए, हाँ सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। और भारत यदि इसी तरह से चलता रहा तो फिर देखिए आप अगले 75 साल क्या होंगे। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे हमेशा की तरह ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो यह था हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।